Hello everyone, welcome back to my channel RN ArchiVision. Today is a new video wherein I would be teaching you in detail of how to copy a single object. This is something very similar, but I wanted to go a little in detail of how we use a copy tool. So let's get started with our video. So for today's video, we're gonna use the copy tool. मैंने आपको 10 essential tools दिखाया है मैंने AutoCAD में. If you haven't taken a look over that video, I'll put the link in the description box and in the above I button as well. So for now, we would take a look over the copy tool. So for copy tool, I'm gonna use the keyword CO. Okay, आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो. I'm having this CO being written, and now आप यहाँ से भी click कर सकते हैं copy. Or if you want, you can just click a space bar on your keyboard. Okay, I'm going to click the space bar because that makes my work much easier and even more quicker. So मैंने ये किया है, and now I got this particular cursor changes over here. I'm going to select any object. I can either select this or whatever I want. Okay, so मैं यहाँ पर अभी select करूँगी एक rectangle. Okay, so ये हो गया है select और मुझे इस चीज़ को copy करना है. Now after selecting, I would click the space bar again. And अभी इस पे I need to select a certain point. Okay, certain point select करके copy करना would make your work much easier. So मैं personally recommend करूँगी कि आप इसे एक point select करें आप. तो मैं यहाँ पर select करती हूँ एक end point, okay, as in this. और यहाँ से I would just move. And जहाँ मुझे place करना है मैं वहाँ place कर सकती हूँ. अभी I want to copy the second box at this particular end. मैं यहाँ भी कर सकती हूँ. अब next box I would want it to be placed over here. यहाँ कर सकती हूँ. अब next box I want it to be here. So इससे क्या होगा आपका, when you use the certain point in here, आपके लिए काफ़ी आसानी ये हो जाएगी कि जहाँ आपको place करना है वो आप आसानी से place कर सकते हो. ठीक है? So that's how you actually use the copy tool. That was like one of my way of using the copy tool. Now the second way मैं आपको दिखाती हूँ of how to use the copy tool. मैं क्या करूँगी, मुझे ये पर्टिकुलर सर्कल मुझे सेलेक्ट करना है. ओके और मुझे ये पर्टिकुलर सर्कल को कॉपी करना है. सो आई विल फर्स्ट सेलेक्ट द सर्कल. ठीक है, फिर उसके बाद अपने कीबोर्ड पे आई वुड पुट द कीवर्ड CO. ओके, नीचे आपको नजर आ रहा होगा मैं CO लिख रही हूँ. I'm going to click the space bar on my keyboard. Okay, space bar enter करना मतलब it's equal to like entering on your keyboard. ठीक है, स्पेस बार इसलिए हम यूज करते हैं. सो आई एम गोना क्लिक स्पेस बार. ओके, और अभी यहाँ पर आई कैन यूज एनी पॉइंट एंड जस्ट मूव इट जस्ट द वे हाउ आई एम willing to place those circles. ठीक है, ये हो गया हमारे प्लेसमेंट. नाउ अगर मुझे करना है ये सारी चीजें कॉपी एक साथ, हाउ डू आई डू दैट? सो उसमें क्या होगा मेरे लिए आसानी, आई वुड जस्ट रैंडमली सेलेक्ट द एंटायर पोर्शन और एंटायर ऑब्जेक्ट दैट आई हैव. ओके, वही सेम करूंगी, CO space bar. Okay, I'm gonna select a certain point. Okay, and then place it right over here. Easy. So this is how you actually can easily copy anything in your floor plans as well. Because floor plans में काफी ज़्यादा आसानी ये होगी because you have like multiple rooms. Okay, आपके पास काफी बड़ा floor plan है, so you will have multiple rooms, multiple areas where you would have different chairs and all. तो उसमें आपको repeatedly बनाना would get extremely difficult, isn't it? तो simple क्या होगा, एक chair बनाओ, उस चीज़ को copy करो आप and then paste it wherever you wish to. ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि हाउ टू ऑफसेट एनी ऑब्जेक्ट और हाउ टू यूज़ द डिफरेंट टूल्स इन डिटेल, और मैं कहाँ कहाँ यूज़ करूंगी वो भी बताऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड अप टिल माय नेक्स्ट वीडियो. आई होप you have loved watching my videos up till now. Thank you so much for supporting me. Do subscribe my channel, do like my videos and share it with your friends. Inshallah, I'll be back in my next video. Up till then, take care and bye bye.